Now here from we move to the next one, and that is Section 75. Section 75. Section 75 कब अप्लाई होता है? जब imported material used होता है manufacturing. Export of goods from इंडिया. ठीक है, अब इसके सेक्शन में चलते हैं. तो सेक्शन क्या कहता है? So here is section 75. Drawback on imported material used in the manufacture of goods which are exported. So the title मैंने आपको सुबह आपको explain कर दिया था, why when the section becomes applicable. Imported material being used in manufacture of export goods, then section 75 becomes applicable. Where it appears to the central government that in respect of goods of any class or description manufactured, processed, or on which any operation has been carried out in India, being goods which have been entered for export. तो अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा क्या एग्रो प्रोड्यूस पर ड्यूटी ड्रॉबैक इसी कैटेगरी में आता है? या इसमें नहीं आएगा? क्यों आना चाहिए? This is a manufactured or processed or on which any operation has been carried out. Those are natural produced. They're naturally produced. Right. तो उसके लिए जो चीज है that is also referred as drawback, but that comes under the foreign trade policy, not under section 75. तो जैसे राइस के लिए इन लोगों ने अभी rice is processed. Rice is processed. Yeah, sortex okay. Not sorted. Rice is processed. Rice बनता है पैडी से. Original product is paddy. Paddy, हाँ. राइस जो है एग्रो प्रोड्यूस की कैटेगरी में नहीं आता. जैसे काजू का एग्जांपल दिया जरा. वो तो इंपोर्ट बहुत होता है रॉ काजू, है ना. रॉ काजू जब आप प्रोसेस करते हैं तब जाकर आपको कैश्यूज मिलते हैं विच आर कंज्यूमेबल. सेम इज अबाउट द राइस. तो अगर आप जीएसटी को थोड़ा डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एग्जम्पशंस आते हैं. सो पैडी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ जीएसटी. यस, वंस पैडी इज प्रोसेस्ड then the product is rice. So rice is not treated as agro produce. So special exemption GST में rice के लिए दिए जाते हैं. Otherwise it is a processed product. यस, एग्जाम्पशन है उसमें नहीं लगता है जीएसटी, है ना. क्योंकि स्पेशल एग्जम्पशन दिया है तो स्पेशल देने का मतलब ही वो कि एग्रो प्रोड्यूस की कैटेगरी है कि राइस को फिर से दिया एग्जम्पशन क्यों दिया. है ना. ऐसी कॉटन में होता है. Right, original this raw cotton and cotton which has been ginning, जिस पे ginning process हो चुका है. So where the ginning process has been done, that is not exempt. Raw cotton is exempt. Okay, so this says manufactured, processed, or on which operation has been carried out, being goods which have been entered for export in respect to which an order permitting clearance under section 51 or order under section 84. So 84 is for export of goods by post. And in respect to which an order permitting clearance for export has been made by the proper officer, a drawback should be allowed to the duties of custom chargeable under this act on imported material or class of description used in manufacture or processing of the goods or carrying out the operation of the goods. The central government may by notification direct that drawback shall be allowed in respect of goods in accordance and subject to rules which can be made in that behalf. Right. So this section is clearly saying that the duty drawback is allowed only if the goods are manufactured or processed on which some process has been carried out, or rather that process is also specified, not every process. Provided that no duty drawback shall be allowed under this section in respect of any of the aforesaid, which the central government may by rules made under subsection 2 specify. If the export value of the goods is less than the value of the imported material used in the manufacture or processing of the goods or carrying out any operations. So जैसा section 76 में already दे रखा है. What is said therein? That if the amount of the duty drawback claimed is more than the market value of the goods, in that case, duty drawback will not be given. Here also something similar. This says, if the export value of the goods is less than the value of the material used in the manufacture of those goods, then duty drawback will not be allowed. So here, not the question of amount of duty. This is export value of such goods or class of goods
is less than the value of the imported material used in manufacturing processing of goods. So by chance अगर कोई चीज scrap हो जाए, waste हो जाए, the price can be lower than the value of the material used. In that case, duty drawback will not be given. Provided further, इसको पढ़ने की जरूरत, हाँ, provided further that where the drawback has been allowed on any goods under this subsection, and the sale proceeds in respect of which the goods are not received by or on behalf of the exporter in India within the time allowed under FEMA, such a drawback shall, except under the circumstances of the conditions central government may by rules prescribe, specify the procedure for recovery. तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? You remember I told you that 3 declarations are required to be made at the time of filing the shipping bill of export? Yes. Which are those 3 declarations? Number 1, goods are not the prohibited goods. And number 2, the values as per the prevailing international price. And number 3, the period for realization of export proceeds. Right. So duty drawback is not subject to realization. जब तक आपको export proceeds आएंगे नहीं, तब तक duty drawback मिलेगा नहीं. This is not the condition. Duty drawback is allowed, but if the finally export proceeds are not realized, entire amount will be recovered with interest, because that will be treated as if erroneous duty drawback has been allowed, and recovery is under section 75A. Right. So what it is said, कब recovery हो जाएगी? Whenever the duty drawback has been allowed erroneously. So this is also a case of erroneous duty drawback. So the person or the exporter has failed to realize the export proceeds. Only in that situation, duty drawback is going to be recovered. Okay. Right. So this is one situation. Another is by chance the duty drawback has been claimed on the higher side and it has been allowed. That is also erroneous thing. Where it appears to the central government that quantity of a particular material imported into India is more than the total quantity of like material that has been used in the goods manufactured, processed, or on which any operation has been carried out and exported outside India, the central government may by notification the official gazette declare that so much of material as is contained in the goods exported shall, for the purpose of section 1, be deemed to be imported material. तो यहाँ पर जो कहना चाहते हैं ये है ऑल इंडिया रेट जो गवर्नमेंट फिक्स करती है. तो आई जस्ट टेल यू कि रेट्स किस तरह से फिक्स होते हैं. इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट उस पर प्रोविजंस पर ले चलता हूं. तो अंडर दिस सेक्शन, so this says duty drawback is allowed on export of goods manufactured or processed in India. Manufactured or processed in India. And this is to refund import duty paid on imported material used in manufacture or processing of export goods. As soon as goods are entered for export,
duty drawback can be claimed. Duty drawback is not based on prior realization of export proceeds. तो प्रायर कंपलसरी नहीं है, right? Below this, if duty drawback has been allowed, and subsequently exporter fails to realize export proceeds within the time specified under FEMA. Duty drawback is recovered. और रिकवरी जो भी होगी हमेशा विथ इंटरेस्ट ही होगी. कितना टाइम होगा सर ये कुछ आइडिया? बस यही पूछ रहे हैं. 9 months. नहीं, पहले तो 180 डेज था बिफोर कोविड. कोविड में 9 months ऑलरेडी अलाउ कर दिया था सबके लिए कॉमन, तो है ना? एग्जाम पर्पस के लिए 9 मंथ ना. अभी तो वही लिखना पड़ेगा आपको, ओके सर. है ना? बिकॉज प्रिवेलिंग लॉ के बेसिस पर एग्जाम हो रहा है ना, तो प्रिवेलिंग इज दैट ओनली. ओके सर. ओके, सो ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी रिकवर्ड इफ इट इज नॉट. अब यहाँ पर इंटरेस्ट जो वो अभी अगला रेफरेंस जब आएगा सेक्शन 75 में तो और क्लियर हो जाएगा कब से लगना शुरू होगा. अब ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. नो ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75. देखिए कॉमन कंडीशन थी व्हेन ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड 76. Then for 74 also we have conditions when the duty drawback will not be given if goods are not identifiable or the period has expired. In this we have a special condition where the drawback will not be given. So in this section duty drawback will not be allowed where rate is less than 1% of FOB value of export goods and amount also doesn't exceed rupees 500.
सर ये कहाँ लिखा हुआ है सर? रूल्स पढ़े? नहीं सर, नहीं पढ़ा। है ना, तो बहुत सारी चीजें बेटा रूल्स में भी आती हैं। रूल्स इतने लंबे होते हैं कि सारी चीजें क्लास में कर नहीं सकते। ओके, ओके तो जो सर। खास सर खास ये चीजें वो 1%, बताता सर ये 1% वाला थोड़ा रेट इज लेस देन 1% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। हाँ रेट थोड़ा का वो है ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट, है ना। समझे नहीं। तो अगर आप कहते हैं कि साहब 1 लाख रुपए एक्सपोर्ट वैल्यू है, यस सर। राइट, और ड्यूटी ड्रॉबैक इसके ऊपर 0.75% तो कितना मिलेगा? 150 भी नहीं होगा। Right? So if the export FOB value of export goods is in rupees, it is 1 lakh, right? And the rate of duty drawback is 0.75%. Yes, Amount sir. is 750. 750। अब इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं इस अमाउंट का? मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। मिलेगा सर, मिलेगा, है ना। अगर बाई चांस ये 0.4 होता तो नहीं मिलता सर, नहीं नहीं मिलता। तो ये अमाउंट कितना हो जाता? 400। 400 रुपए हो जाता। तो दोनों कंडीशन खत्म हो जाती। Yes. Rate is also less than 1% and amount is also not exceeding 500. अब दूसरे सिचुएशन देखिए, सर तो वैल्यू दोनों में से इज 40,000, राइट, बट ड्यूटी ड्रॉबैक रेट इज 1.5%। अब यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा सर, मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, मिलेगा। सर। 600 कितना हो गया ये? 600 हो 600। गया, इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर रेट भी 1% से ज्यादा और एग्रीगेट अमाउंट भी 500 रुपीज से ज्यादा है, मिल जाएगा, राइट। अब मान लीजिए 75,000 है एक्सपोर्ट वैल्यू, यस सर। राइट, रेट है से 2% और ड्यूटी ड्रॉबैक 1500। कम करके मुझे बताना है आपको। नहीं सर, वैल्यू कम कर दीजिए ना तो उल्टा हो जाएगा। 0.02 कर दीजिए। 0.5 ले लीजिए, 1% करिए और वैल्यू 30,000 कर दीजिए। 0.5 कर दीजिए सर डायरेक्ट। चलो वैसा करके देखो आप, तब क्या होता है। अगर आपने इसको 40,000 रखा, राइट, और अगर ये अमाउंट जो है आपका 1% हो गया, तब क्या होगा? मिलेगा, 400 मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा सर। मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। यहाँ क्या लिखा है? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। मिलेगा और सर, the rate अमाउंट भी is- 400 सर होगा। लेस देन 1% है, 1% तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना सर। यहाँ मिलेगा तो ना, फिर वही तो 50 बता से रहा हूँ, नीचे होना चाहिए। वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर मिलेगा बिकॉज इट इज 1%। Yes, Had it sir. been below 1%, तो नहीं right, मिलेगा। हाँ, अगर तो ये नहीं मिलता। 0.9% होता तो नहीं मिलता सर, है तो ना? नहीं मिलता, 0.99 होगा तो भी नहीं सर मिलेगा। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मिलेगा। नहीं, दोनों दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन देखे गए एग्जाम में, ध्यान रखना, यस राइट, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो अगर रेट 1% से कम है और अमाउंट भी 500 से ज्यादा नहीं है तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सर दोनों में से एक होगा तो मिलेगा ना। हाँ, दो में से एक अगर होगा तो मिलेगा, बिकॉज दोनों कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ दोनों तो फुलफिल में से होगा एक तो ही नहीं हो रहा है मिलेगा। ना। ये कंडीशन फुलफिल हुई, एक डिससेटिस्फाई हुई तो मिल जाएगा। तो अमाउंट either- 500 से कम है, अमाउंट 500 से कम है, जैसे ये सिचुएशन है, लेकिन रेट 1% या उससे ज्यादा है तो मिलेगा। हाँ तो सर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो तो मिला ना, सर, तो and दो क्यों कहाँ हुआ? से हुआ सर? तो मिलेगा। सर एक मिलेगा। की सर तो होना एंड चाहिए। क्यों लिखा एंड की जगह नहीं और होना होती चाहिए ना सर वहाँ पे। हाँ क्या? सर तो नहीं सर दोनों एंड की जगह जगह और और होना नहीं होगा। और में तो अपने पास ऑप्शन हो जाता है, एंड तो दोनों का ड्यूटी होगा। ड्रॉबैक नॉट अलाउड इफ दिस प्लस दिस बोथ आर देयर। If one of them is there, then duty drawback is available. अवेलेबल। Okay. Starts with negative. ठीक है। No duty drawback under section. मीन्स 1% से ज्यादा है बट 400 रुपया अगर ड्यूटी ड्रॉबैक है तो भी तो मिलेगा, मिलेगा। राइट? ओके मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक
rates under section 75. Three types of rates are there. One is called all industry rates. Next is Special brand Brand rate, Brand rate. and third is special brand special rate. brand rate. Brand rate. special Brand. brand rates. Okay. This is for goods Generally generally exported तो हर साल फाइनेंस बिल आने के बाद नए रेट्स आ जाते हैं, राइट? ब्रांड रेट्स for an This article is- not exported earlier. before. Okay, so for an article not exported before, राइट? तो यहां पर करना क्या पड़ेगा? रिक्वेस्ट करने के लिए कैसे हम देना पड़ेगा? आपको शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी लिखना पड़ेगा क्लेम अंडर ड्रॉबैक, राइट? प्लस स्पेसिफिकली दिस इज ब्रांड रेट केस, so that the officer can collect the sample before goods are cleared for export, right? In this case, so that the officer can collect sample. अगर उनको लगता है तो कलेक्ट कर लें, otherwise you can make an application even after the export and the rates will be fixed. So that rate is only for that particular consignment. From the next time onwards, next year onward, that will rates will come under this category. Special brand rate, when this is applicable? For an article where AIR already available, Less than it. exporter claims 20% and more than that. For an article for which AIR has been prescribed, but exporter claims excess duty drawback. All industry rates are there, but his claim is for the higher amount, and gap is at least 20%. The claim of the exporter is exceeding at least 20% from the rate given by the government. So सीधा सीधा आप amount से compare करें, what amount is there as per the government rate and how much amount as per his calculation. So if the gap is 20% at least, then this can be done. And here also the procedure will remain same. So that in the shipping bill or in the bill of export, you will have to specify that that this is under the duty drawback under the special brand rate, so that if the officer wants, he can collect the samples.
Right. Who will determine the rate of duty drawback later on? मतलब सैंपल के बाद jurisdiction commissioner of ये customs. तो एक्सपोर्ट के बाद सब रेट डिसाइड होने वाले हैं। नहीं रेट सर, डिसाइड कौन जैसे स्पेशल सर, ब्रांड रेट में तो ऐसा है ना, जैसे एक बार ये डायरेक्ट हो ऑफ गया ड्यूटी ड्रॉबैक। तो फिर उसका जो ड्रॉबैक का कोड है वो ब्रांड रेट का कोड ही अलग आ जाएगा स्पेशल एक्सपोर्टर्स के लिए। वो तो आ जाएगा, लेकिन रेट डिसाइड कौन करके देगा? डायरेक्ट ऑफ सेंट्रल ड्यूटी गवर्नमेंट, Commissioner. सेंट्रल Commissioner. सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रिंसिपल लास्ट कमिश्नर वीडियो में जी डायरेक्ट करेगा सर। Directorate of duty drawback. Right. So there is a separate office for that, directorate. So there is a director. Directorate of duty drawback that will determine the amount. So application किसको लगाएंगे? Application will go to the directorate of duty drawback. Okay. So once अब ये जो रेट फिक्स हुए हैं, this is for a specific article for a specific exporter. It is not for everybody. Right. And yes, these are automatically applicable to everyone. This is one time exercise. Subsequently, these rates will automatically be merged into this. This is a repetitive exercise if required. Right. So these are the rates at which duty drawback is allowed under section 75. अब मामला आता है